Actually, I was working as a freelance designer already on Fiverr, but I was level 1 seller, you can say. But later on, I had a urge to for UI UX design course. इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिला? Obviously, मेरी एक तो अर्निंग इंक्रीज हुई, दूसरा मेरे क्लाइंट्स जो हैं उनका ट्रस्ट जो है वो मुझ पे बिल्ड हो गया. If you are asking me in dollars, I am earning more than $2,000 That's at too much. this point. PNY ट्रेनिंग्स के साथ मैं आपकी होस्ट खदीजा खलील एक बार फिर हाजिर है अपने एक नए सक्सेसफुल गेस्ट के साथ. और अब मेरे सक्सेसफुल गेस्ट हैं हिरा आसिफ. हम इनसे भी जानेंगे कि इन्होंने PNY से कौन सा कोर्स किया और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल. आइए जानते हैं हिरा से. अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? गुड, थैंक यू. अच्छा हिरा, मुझे ये बताएं कि आपने PNY से कौन सा कोर्स किया? मैंने रिसेंटली यहाँ से फुल स्टैक ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स किया है. कितने मंथ्स का? और इट वाज फॉर 6 months. सो हिरा, मुझे ये बताएं कि व्हाई दिस कोर्स? आपको किसी ने सजेस्ट किया था ये कोर्स करने के लिए? Actually, I was working as a freelance designer already on Fiverr, but I was level 1 seller, you can say. But later on, I had a urge to for UI UX design course, but this was recommended by a friend, which is why I joined, and I'm very happy with the course because now successfully I have become a level 2 designer, and I'm working with a lot of abroad clients, you can say. So आपके clients regional based हैं या abroad based हैं? They are all abroad based. इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिला? Obviously, मेरी एक तो अर्निंग इंक्रीज हुई, दूसरा मेरे क्लाइंट्स जो हैं उनका ट्रस्ट जो है वो मुझ पे बिल्ड हो गया. एंड द यूनिवर्सिटी लेवल they just teach you some basics, but with this course I get to learn some advanced thing, which is why I'm earning more than which I was before. Okay, great, माशाल्लाह. Okay, हिरा, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा स्किल जो आपने अपने इंस्ट्रक्टर से सीखा हो मोटिवेट रहने के लिए, वो क्या है? I would say consistency. Okay, हिरा, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे व्यूअर्स को जिन्होंने इस फील्ड में आना है, वो अपनी कौन सी स्किल पे वर्कआउट करें? I think मैं यही कहूँगी when you are a basic graphic designer, because when I completed my degree, वो ये होता है कि जैसे आप कोर्स कंप्लीट करते हो, you just know the basics, and you cannot grow in this field until you have some polished skill, like advanced skill. You get to know and learn things. और वो situation ये बनी थी, I was actually doing a job at a Lulu Serve brand, but later on this COVID situation happened, जिसकी वजह से जो है I decided to work from home, and in between I decided also to take this course. So it was pretty well. और इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि I am not doing and I'm not even looking for a 9 to 5 job now because I'm earning pretty well from home. Oh, great. Okay, मुझे ये बताएं कि PNY की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? I think they are very good, and you can say a plus point to every degree you are. Also, when you have a lot of spare time, this is a good opportunity to way to polish your skin, because we cannot actually मुझ में ये चीज़ है, I always want to do something, and मैं जो है वो फायरिंग में रह सकती हूँ. मुझे होता है कि कुछ ना कुछ, एक तो you cannot grow without learning. जब आप ग्रो कर रहे हो आपको लर्निंग साथ साथ रखनी पड़ती है. जब आप नहीं रखोगे तो you cannot reach that level. तो लर्निंग और ग्रोइंग ये साथ साथ है. So हिरा, आपको कितनी अर्निंग्स हो जाती है? कोई एस्टिमेशन हमें बता दें. If you are asking me in dollars, I am earning more than $2,000 That's at too much this point. So हिरा, ये जो सर वहाब यूनुस का मोटो है, यूथ को एम्पावर करने का अज़्म, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी व्यूअर्स को? I think very few people actually took this step and benefiting the youth, but this is something very unique, and I think it's very good motive to motivate the new generation to not only stuck on their what they have learned in the university, but to grow their skills. और बहुत अच्छी चीज़ है, and I would suggest and I would encourage everyone to join these courses. ओके, थैंक यू हिरा, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला. ओके व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट एपिसोड तक. अल्लाह हाफ़िज़.